moment of force is 5 Newton meter about fixed point O and there is a force of 10 Newton acting. हम मान लेते हैं ये कुछ है, ये फिक्स पॉइंट O है और मोमेंट ऑफ फोर्स हमें किसी भी डायरेक्शन में मिल रहा है 5 न्यूटन मीटर का, ठीक है, अबाउट पॉइंट O एंड फोर्स एक्टिंग इज 10 न्यूटन, ठीक है। तो हम यहाँ से हमें पता है मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. Force is 10 Newton and moment of force is 5 Newton meter into perpendicular distance we do not know. We will consider it to be x. Now this will come out to be x is equal to 5 by 10 and the x comes out to be 0.5 meter or rather we can say 50 centimeter. Now moving on to the next question. कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट O. पहले तो हम मूवमेंट ऑफ फोर्स इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे और सेकेंड वन इज अबाउट द पॉइंट A. तो फिर हम मूवमेंट ऑफ फोर्स किस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, इस पॉइंट के. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे बना दिया, आई हैव ड्रॉन इट लाइक दिस. ओके, तो फोर्स अबाउट द पॉइंट O हम पहले निकालेंगे. मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. Force is 2 Newton and perpendicular distance is, this diameter is of 2 meter, then the perpendicular distance, this radius would be 1, this would also be 1. diameter का आधा ही तो होता है radius. अगर ये 2 है तो ये 1 ही तो हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा. Now this will come out to be 1 meter is equal to 2 Newton meter. Now about the point A, now the distance would increase to 2 meter. would increase to 2 meter. So moment of force about point A is equal to force into perpendicular distance. Now force would be 2 Newton and perpendicular distance, क्योंकि हमने ये पॉइंट अब पिवट कर दिया. पहले इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे थे, अब इस पॉइंट को फिक्स करके हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमारी अब इंक्रीज होगी ना, ये बढ़ जाएगी, ये 2 हो जाएगी 2 मीटर. Now this would come out to be 4 Newton meter. Now moving on to the next question. There is a spanner and we have to open a nut. Spanner is of size 10 centimeter and the least force which is required to open this nut is 5 Newton. So the moment of force निकालना है. इसमें भी हमें moment of force is equal to force into perpendicular distance. सारे examples करने के बाद this would be the easy one. These all are the easy one. 5 Newton into 10 divided by 100 because this is in centimeter and we have to take it in meter. This would come out to be 0.5 Newton meter. Now moving on to the next question. There is a rule balanced at this point and there is a force of 5 Newton acting at point A which is at the distance of 2 meter. And there is a force of 3 Newton acting at a point B which is at a distance of 4 meter. Now moment of force F1 about O. F1 about O. F1 हमारा कैसी फोर्स जनरेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज. तो moment of force F1 about O is equal to force into perpendicular distance. Now force is 5 Newton and perpendicular distance is 2 meter. This comes out to be 10 Newton meter. Alright, moment of force F2 about O. F2, this would be creating moment of force F2 about O is equal to force into perpendicular distance. Now force is 3 Newton and perpendicular distance is 4 meter and this would come out to be 12 Newton meter. Alright, this would be given clockwise and this would be given anti-clockwise. Total movement of two forces. As we all know, clockwise is negative and anti-clockwise is positive. So we will take this as negative and this would be positive. ये नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी क्योंकि ये हमारी 12 न्यूटन जो है क्लॉकवाइज है. ऑलराइट, और चाहे जो भी बड़ी ले लो, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेते हैं. तो मोमेंट ऑफ फोर्स
net. What it could be? 12 Newton meter minus 12 Newton meter, and this would come out to be